गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं हूं पराग देसाई। आज हम हमारा NiTech का वाटर आयोनाइज़र यहाँ पे इंस्टॉल करने आए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पहले से ही एक एक्वागार्ड लगा हुआ है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे मशीन को RO की ज़रूरत नहीं है, तो थोड़ी देर में यहाँ से हट जाएगा और हमारा NiTech का वाटर आयोनाइज़र यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। Now we are de-installing the aquaguard. उठा ऊपर चढ़ जा। और ये हमारा यहाँ से जो एक्वागार्ड था वो हम लोग ने हटा दिया है। पीछे से What are we opening? This will be used for what? Pre-filtration. Pre-filtration bowl. Okay. The aquaguard which was here has been removed, and now we are going to install our NiTech water ionizer. Can you just remove that once again and see what is this? PP filter. Okay. 0.5 micron PP filter. 0.5 micron PP filter. Yeah. Okay. And that's the gasket. And we close the lid. Now we are installing the PP filter. Okay, this has been installed. Thank you. Now we are installing the NiTech water ionizer. There you are. It has been installed. So this is how it looks right now without any piping. अभी चालू कर दो। We are connecting the input. This is how it is connected. So that's the input pipe which is connected now. This is the UF membrane and the activated carbon filter, and we are flushing the filter first before the installation. So ये activated carbon filter flush हो रहा है और उसके बाद में यहाँ पे ये ऊपर लग जाएगा. Okay. लगा दे। ओके। अब ये कार्बन मेम्ब्रेन कनेक्ट हो चुका है और जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे मशीन पे एक भी स्विच या बटन नहीं है। हमारा आयोनाइज़र जो है पूरी तरह से रिमोट पे ऑपरेट होता है। Can't see any buttons here. Now we are connecting the alkaline water output pipe.
already connected the waste water pipe as well, the white pipe that you see along with the blue pipe. इसको ऊपर रखे इसको भी बांध देते हैं. This is the power supply, which will be external and it will be placed above the machine. स्विच हो. हाँ बोर्ड में. और ये पावर सप्लाई भी कनेक्ट हो गया है.